Assalamu alaikum students, welcome to the first part of second lecture. In first lecture, in the end we learned to count the possible outcomes for any experiment that we performed. We learned the counting techniques, whether it was the multiplication rule or the permutations or combinations. So that thing gave us the idea that for every experiment that we are doing, the random experiment, what total count of the outcomes is possible. Like we did for tossing a coin, we saw that okay, if you are tossing a coin once, the possibility of having the outcomes is either you can get a head or a tail. The two options you have, the two possibilities you have, you can't have any other option than that. Then we saw that okay, if we are tossing a coin two times, we can either have two heads, we can have a head followed by a tail, we can have a tail followed by a head, or we can have two consecutive tails on two tosses. Similarly, we saw for die roll, or we saw for multiple things that what possible outcomes can be. Once we are done with counting the possible outcomes and we know that what possibilities we have for the outcomes that would occur when we are performing the experiment, the next thing that comes forward, the next target that we have is to assign probabilities to those possible outcomes, to determine or to make decision that okay, how likely some particular outcome is to happen. If I am doing the random experiment of tossing coin once, what are the chances that I would get a tail, or what are the chances that I would have a head on my toss? Similarly, for the experiment when I'm tossing a coin for two times or for many times, or I'm rolling a die or rolling dice for two or three times, or two or three different dice, that what are the chances that a particular outcome would occur, it would turn out. So in today's lecture we are going to learn about assigning probabilities to different outcomes. But before assigning probabilities to different outcomes, to different events, or whatever things we have in front of us, the prime important thing that we need to keep in our head is the basic requirements of the probability, that what necessary things must be kept in head so that our assigning of probabilities really makes sense. They are not misleading, or they are not illogical. The first requirement that we need to always keep in our head and make sure that it is followed and it is valid, it is not violated, is that for whatever thing you are finding the probability, that probability must always be between 0 and 1 inclusive. It should not exceed 1 and it should not be lesser than 0. It means that if on a line from 0 to 1, you may also call it a probability line, whatever experiment you are doing and whatever outcomes you get of that, their chances must always be between 0 and 1, where we mean by 0 an impossible outcome, something that really does not have any chance to happen. Okay, I was suggested to speak Urdu as well. So for the outcomes that really don't have anything to happen, जिस तरह अगर हम एक कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो या तो टेल है या हेड है, और हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी पॉसिबिलिटी की जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता. से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ओके, एक कॉइन टॉस करने से क्या चांसेस हैं कि 2 बार हेड आएगा. सो एक टॉस पे 2 बार हेड आना एक नामुमकिन सी बात है, उसका कोई चांस नहीं बनता. Similarly, like any such thing which does not make sense, which is really impossible to gets 0% chances or 0 probability. You may also call it 0 probability or 0% chance, whatever, 0% probability or 0 probability. Similarly, for something that is really sure, that is really certain, we have the probability to be exactly 1.
So something that is 100% sure, something that is completely sure to happen. Okay, if I'm tossing a coin and I say that my event is कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. टॉस करते वक्त मैं कहता हूं कि क्या चांसेस हैं कि या तो कोई हेड आएगा या टेल आएगा. So definitely the coin toss does not have any other option than that. Either a tail would happen or a head would occur. So for that event, जो event मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो बात मैंने फिक्स की है कि इस बात के क्या चांसेस हैं कि टॉस करने पे या तो हेड मिलेगा या टेल आएगा. So इस बात के 100% चांसेस हैं, क्योंकि इससे बाहर की कोई गुंजाइश ही नहीं है. या तो कॉइन टॉस करने पे हेड आएगा या टेल आएगा. सो ये एक श्योर इवेंट है जिसको हम प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में ऑलमोस्ट श्योर इवेंट भी कहते हैं. जिस इवेंट के, जिस आउटकम के चांसेस हमारे पास 1 हो या 100% हो, उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, ऑलमोस्ट श्योर इवेंट कहते हैं. और जिसके चांसेस हमारे पास बिल्कुल नहीं है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. सो अगर हम लॉजिकली भी इसको देखें तो हमारे पास किसी भी चीज के होने के चांसेस नामुमकिन से कंप्लीटली मुमकिन और कंप्लीट लाइक श्योरिटी के दरमियान हो सकते हैं. इससे कम नहीं हो सकते और उससे ज्यादा नहीं हो सकते. लाइक ओके, वी मे से दैट ओके आई एम 100+% श्योर अबाउट दिस थिंग, बट वो सिर्फ कहा जा सकता है. दैट मेक्स नो सेंस फर्दर. Similarly, if we say that the chances for something are 0.5, or we may write it in a fractional form 1/2, or we may say that it has 50% chances. All the ways of writing it in a decimal, writing it in a fractional form, or writing it in a percentage form, they are the same things told in different ways. So by saying कि किसी भी चीज के 1/2 chances हैं, we are saying that it is half likely to happen. It is same as likely to happen as not likely to happen. इसके होने के और ना होने के एक जितने chances हैं. 50% 50-50 chances हैं कि या तो हो सकता है या नहीं हो सकता. So once we are deciding the probability for any outcome, for any event, this care must be taken that the probability is not lesser than 0 or it does not exceed 1. किसी भी चीज के, किसी भी आउटकम के, किसी भी इवेंट के जितने भी चांसेस हैं, जितना भी चांस हम उसके लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, इतना चांस है, इतनी प्रोबेबिलिटी, इतना इम्कान है इस चीज के होने के, वो इम्कान 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए या 0% से लेकर 1% तक होना चाहिए. इससे कम, 0 से कम, 1 से ज्यादा होने का कोई चांस नहीं बनता या उसका कोई सेंस नहीं बनता. The next thing that we need to take care of is that when you are deciding probabilities for different outcomes, you have some 2 possible outcomes, 10 possible outcomes, 100 possible outcomes, and you are assigning probabilities to each one of them. This care must be taken that once you are adding the probabilities of all the individual outcomes, that sum must be equal to 1, or that sum must be equal to 100% probability, 100% chance. It should not exceed 1 or it should not be lesser than 1. यानी कि अगर हमारे पास, इस केस में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टेल आने के और हेड आने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं. मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कॉइन को हमने टॉस की है. सो लॉजिकली अगर हम देखें तो टेल आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितना हेड आने के चांसेस हैं. तो हम यही कहेंगे कि भाई दोनों के 50-50 चांसेस हैं. लाइक 50% चांसेस इसके हैं और 50% चांसेस हेड आने के हैं. या हम कहेंगे कि 1/2 चांसेस इसके हैं और 1/2 चांसेस इसके हैं. क्योंकि अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी असाइन करने की टेक्निक्स नहीं पढ़ी, सो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी. यहां पे मुझे माफ कर लीजिएगा. सो once we allocated probability to tail that it has 1/2 chances, and we said कि the head has got 1/2 और 50% chances as well. तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास क्या आता है कि 1/2 + 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा 1, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि चलें टेल आने के 50% चांसेस है लेकिन हेड आने के 80% चांसेस हैं, तो यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. ये नहीं हो सकता कि टेल के 50% चांसेस हैं लेकिन हेड के 50 से ज्यादा % चांसेस हैं, क्योंकि 50% और 50 से ज्यादा जो है उसका सम हमारे पास 100% से ज्यादा हो जाएगा, जो कि कुछ गलत है. इसी तरह से जब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं
या हम अगर बात कर रहे हैं कि हमने एक डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करने के हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि या तो उसके फेस पे या तो 1 डॉट आएगा या 2 डॉट्स आएंगे, इट वुड हैव 3 डॉट्स ऑन इट, और 4, 5 और 6 डॉट्स ऑन द फेस। सो अगर देखा जाए तो सबके ऑप्शंस, सबके चांसेस एक जितने हैं, बराबर हैं। जितना चांस 1 का नजर आता है उतना ही चांस हमें 2 का नजर आता है। हमें नहीं पता कि ओके 1 के आने के ज्यादा चांसेस हैं या 2 के आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर देखा जाए दूर से, बाहर से, तो हमें यही लगेगा कि जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही चांसेस 2 के आने के हैं, उतने ही चांसेस 3 के आने के हैं, उतना ही छक्का आने के चांसेस हैं। सो वी वुड से कि ये 6 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो हर एक ऑप्शन के या हर एक आउटकम के 1/6 चांसेस हैं। यही हम कहेंगे कि 4 आने के भी 1/6 चांसेस हैं, 5 आने के भी 1/6 चांसेस हैं एंड 6 आने के भी 1/6 चांसेस हैं। अगर इन सबको ऐड कर दें कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड प्लस 1/6, तो ये हमारे पास श्योरली 6/6 जो कि 1 है ये बनाएगा। सो जब भी हम प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज असाइन कर रहे हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी पॉसिबल आउटकम्स को, हमें ये चीज जरूर याद रखनी है, हमें ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम ना हो, 1 से ज्यादा ना हो। और जब भी मुख्तलिफ इवेंट्स को, मुख्तलिफ आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर रहे हैं, तो ये बात जरूर याद रखें कि जब उन सब प्रोबेबिलिटीज का टोटल किया जाए तो वो टोटल 1 से ज्यादा ना हो, 1 से कम ना हो, वो एग्जैक्टली 1 हो।